mirror work, you won't be surprised which brand it is from. I can confidently say Okai because it's one of the statement brands of India that is run by rural artisans. Hi, this is Ankita from HyBiz Tv, and today we have a special guest on our Women Entrepreneur series. We have with us Manorat Dillo, the CEO of Okhai. Okai is a beautiful brand run as a women empowerment, social enterprise, and a fashion brand. Today we are going to talk about her story and her journey. So hi, how are you doing today? Hi Ankita, thank you for having me. I'm doing very well and you're looking very beautiful in that outfit. Thank you so much, and so are you. Thank you. So, can you tell me what does Okai mean, and what was the inspiration behind starting Okai? How many years has it been for it? Okhai was started in an area called Okhai Mandal in Gujarat, and the people from there are called Okhai, and that's where the name comes from. The idea came many years ago when there was a drought for 4 years in the region, and the primary income generator was agriculture. Now, the community had lost that because of the drought, but the women from the community had their embroidery skills and had these beautiful pieces at home, and they decided to go commercial with their product. That's where the idea came from. Rami was one of the people who started it, and now there's not just Rami, there are about 5,000 women in that area that are working in embroidery and taking their products worldwide. So, what exactly is Okai? Okai is a social enterprise and a fashion and lifestyle brand which is led by artisan communities from across the country, which means that everything that the business makes, the proceeds of all of that goes back to the artisan. There is no middleman. They are the ones running the show and they are the ones benefiting from it. It is a sustainable brand. We have beautiful handcrafted products with centuries old craft techniques from all across the country and from all different kinds of crafts and materials at the store and on the website. So, is this the first time you guys are in Hyderabad, and how do you feel about the Hyderabad market here? So we are primarily an e-commerce business, and Hyderabad is on our top 5 cities in India. And we know we have a lot of customers here, but we had never met them for so many years. And an exhibition here was long overdue, and we are so happy that you're finally here. And today and tomorrow we are going to be here, and we've already met so many of you guys. It's wonderful. It's amazing to meet everyone here. I've bought a lot of dresses from Okai, and what I've seen is like you guys have used a traditional embroidery onto contemporary designs. How far have you gotten from where you started when it was, drought stricken region to a very small scale to now, which is like a huge brand? Okay, everyone knows. It's been a long, very, very beautiful journey. We started with kurtas, and because, when we thought of making Okai a brand, we thought, what can we actually sell? Cushion covers, bed covers, maybe curtains, and how much of those can people actually really buy, right? So we thought of doing apparel, and we did not have any expertise in garment stitching. And we thought, so what is that one product that everyone wears in India and is not that complicated to stitch? And the answer was very, very straightforward. It was a kurta. And that's where we began from. So they were very basic kurtas with this beautiful embroidery on the yokes or on the sleeve edges. And we decided to give them pockets. And that's how the whole pocket in kurta trend began in India, I can say, in fact. And from there to now, we've traveled a long way in terms of both design and also how we use embroidery on certain silhouettes. Now we are doing like business suits, jackets, we are doing saris, we are doing dresses, we are doing the beautiful wrap dresses that Ankita here is wearing. So yes, so there's been incredible amount of skill development, not just in making these beautiful garments, but also skill development and growth in the artistic space of the embroideries. So, how do you make sure to implement sustainability into your brand? So, sustainability is a very, very complex subject, and we all know we are in a system where it almost becomes impossible for us to be sustainable in all areas of our lives. And when we buy clothes, we are already getting something which is an unsustainable garment from most brands, right? From fast fashion brands. So we thought that why not take that burden off of people and give them something that is a sustainable product so they don't have to worry about keeping that in their wardrobe. It's a slow fashion brand. Slow fashion in itself means that you're going to take 8 months to 2 years
to develop something. It's not going to be done in 2 weeks. Being a slow fashion brand, we are sustainable right from the beginning. Craft has been sustainable for centuries. That's why it's lasted that long, and that's exactly what we are doing. We've not changed anything in the process. Whatever fabrics that we use to make garments usually have some waste or some panels that come out when we cut a certain pattern for a certain garment. And that was the only waste that we were generating. And it was a serious matter of concern for us, because after 2 or 3 years, we ended up collecting big bundles of waste. And then we were wondering what to do with it. Should we burn it and cause environmental pollution? Should we send it to a landfill? Again, that's polluting. Then the artisans came up with an idea and they said, let's make something out of this. And we started making little baubles and little toys and little scrunchies and little pouches. So now none of that fabric or the panels that come out of production go waste. Everything is used to make something else and nothing goes to the landfill. So on that front, we are sustainable. We also have a program where whatever you buy from Okai, you can actually sell it back on Okai to another customer. So it's a circular program. You don't have to throw those garments away. You don't have to get rid of them in an unsustainable manner. You can give it to someone who would really appreciate it if you're bored of it. And I would really urge everyone who has an Okai piece to do that. If you're bored of that Okai piece, sell it on the Okai website. So apart from the apparels, what are the other products that we have in your online store? Okai started with apparel in the area of Okhamandal, but from there we've moved on to working with artisan communities from all across India. Now we have products in basketry, we have products in ajrak, we have products in silver, we have products in filigree work, in karjobi, in all kinds of block printing. Every craft that you see in India and that you hear in India and is centuries old, there is a community actively working on it, and that community is today a part of Okhai, selling their beautiful products through the platform directly to everyone. How many stores do you have in India and what are your future plans? Just yesterday, we were all discussing in the team what our future plans should be and how many stores we should have. Right now, we have only one store in Kala Ghora in Mumbai, and we are primarily an online store. But who knows, in 3 years, we might have many, many stores and one even in Hyderabad. Let's see. Thank you so much, Manorat. It was wonderful talking to you. I know you guys are very curious to know what Okai has. So come to their Hyderabad exhibition and look at their garments and apparels which are there. And you can also check their website, which has a lot of stuff in there. So we go and talk to the artisan right here. She's Rami Behan and we are going to just talk to her right now. So आज हमारे साथ है रामी बहन, आर्टिसन, जो ओखई के साथ जुड़ी हुई हैं और आज हमें बताने वाली हैं कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है ओखई के साथ काम करने में। तो रामी बहन, आप अपनी स्टोरी बताइए थोड़ा। जैसे कि जब से ओखाई स्टार्ट हुआ तब से 1998 और 99 से मैं ओखाई से जुड़ी हुई हूँ। पहले हम लोग सिर्फ कुशन और वो करते थे, अब हम बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं और इसके साथ जुड़ने से मुझ में जो आत्मविश्वास आया है, मेरी बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो मेरे पास वो शब्द नहीं है कि वो मैं क्या बयां कर सकूँ। सपोज जो बहनें जिसकी कला जो छुप रही थी वो ओखाई के जरिए आगे आ रही और अब ऑल इंडिया और समझो तो पूरे विश्व में वे सबको पता है कि ओखाई क्या है। क्योंकि ओखाई एक ऐसी चीज़, ओखा मंडल जो ऐसी जगह थी कि जो किसी को पता ही नहीं था कि ओखा मंडल क्या है, लेकिन ओखाई की वजह से ओखा मंडल का और ओखाई के आर्ट्स का जो है वो दुनिया के सामने आया है। और इसमें बहनों को अपना काम करने की भी बहुत अच्छा लगता है और जो आमदनी मिलती है उनके जरिए ओखा मंडल की जो बहनें हैं वो भी काफ़ी आगे आई है, जो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकती है, इवन अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को भी कामकाज में भी हेल्प कर सकती है। इसकी वजह से ओखाई सपोज समझो तो एक बहनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जो प्रदेश है वो बहुत सूखा होता है, वहाँ पे और आमदनी का कोई और जरिया नहीं है। तो ओखाई एक ऐसा जरिया है कि बहनों को घर बैठे आमदनी मिले। अच्छा रामी बहन, आप एक
एक बात ये बताइए कि ये जो आप लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? ये ट्रेडिशनली तो दूसरे तरह से होती होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि बेडशीट्स पे, कुशन कवर्स पे, अब आप ड्रेसेस पे कर रहे हैं, तो आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है उन चीज़ों पे करने में वर्सेस इन चीज़ों पे करने में? जैसे कि ये तो हमारे ब्लड में है, लेकिन जो हम पहले करते थे, जो बेड कवर पे और उस पे बड़ा बड़ा करते थे, अभी हम डिज़ाइनर को के साथ मिलके छोटा और वगैरह ये सब करते, तो ये बहुत मज़ा। और इसमें जो हमारी चीज़ें वही है, लेकिन उसको अलग तरीके से है। सपोज़ कि अगर कोई बिजनेस वूमन वो पहन रही है, वर्किंग वूमन वो पहन रही है, तो वो कैसा पहनेंगी उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये करने में भी हमें बहुत मज़ा आता है। और ये सब चीज़ है जो हमारी चीज़ है उसको थोड़ा पॉलिश कर दिया है। बाकी तो जो है वो हमारे बहनों के ब्लड में है, और जो नहीं आता है वो हम ट्रेनिंग से सीख जाते हैं और बहनों को सिखा भी देते हैं। जैसे कि मेरा एक काम है कि मैं बहनों को ऑन बोर्ड करती हूँ, जो नई बहनें हैं उनको सिखा के ओखाई के साथ जोड़ना। तो ये एम्ब्रॉयडरी है जो हमारे एरिया की है, और अगर कहीं बाहर से भी हमें सीखनी है तो बहनें एकदम उत्साहित रहती है सीखने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों ने 20 लोगों से, 20 औरतों से स्टार्ट किया था और अभी 5000 औरतें हैं, तो कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है उनको ट्रेन करना? डिफ़िकल्ट और वो तो है ही, क्योंकि 20 से स्टार्ट किया और आज 5000। पहले तो बहनों को एग्री करना और वो सब था, फिर धीरे 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 20 से 5000 तक पहुँचते पहुँचते हमें 20 साल लगे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बहनें ये भी बोलती है कि क्या मिलेगा, क्या करेंगे, लेकिन इसके साथ जुड़ते जुड़ते और उसमें काम करते करते अब बहनों को मज़ा भी आ रहा है। और जो एक बेस्ट उनका पार्ट ये है ओखाई का कि बहनों को कहीं बाहर नहीं जाना, वो अपने घर में अपने बच्चों को रखते हुए, अपना फैमिली संभालते हुए वो अपने घर बैठ के काम कर रही है। जैसे कि हमारा जो प्रोसेस है मिल्क रूट वाला, कि हम उनके घर पे जाके काम देते हैं, तो वो सबसे अच्छा है जो बहनों को ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हमारे वहाँ के एरिया की बहनें हैं वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी, समझो तो प्राइमरी तक भी बहुत कम लोग पढ़े हुए हैं। तो उनके लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि घर बैठ के उनको काम मिल रहा है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। इसलिए वो ज़्यादा जुड़ी और आज भी वो बहुत अच्छी आमदनी भी कर रही है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, उनका मन थोड़ा ट्रेडिशन से हटता जा रहा है। तो जैसे कि यंग जनरेशन के लोगों को एम्प्लॉय करना, ओखई में लाना, उनको ये बताना कि भाई ये इंट्रिकेट आर्ट है, आपको ये करना, ये क्या इजी रहा है आपके लिए? ईज़ी तो नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये एकदम बंद ही हो रहा था कि ये कर करके क्या करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि आप देखेंगे तो आर्ट्स है ना पूरी दुनिया में आगे चल रहा है। तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी ये काम करने के लिए रेडी होती है और करती भी है। जैसे कि हमारे वहाँ पे जो कास्ट है, जैसे कि मैं रबारी हूँ तो रबारी है, सतवारास है, आयर्स है, वो लोग में क्या होता है कि वो उन लोग की लड़कियों को थोड़ा बहुत वो सीखना ही रहता है, तो वो लोग करते हैं। और काफ़ी ऐसे भी घर है कि जहाँ पे अभी हमारे मैंने बात की कि पढ़ाई बहुत कम है, तो जो कम पढ़े लिखे 8-10 तक वो भी ये काम करती है और सबको अच्छा लगता है ये काम करना। इवन जो सर्विस नहीं करती वो करती, वो बहनें ये काम करती, हाउसवाइफ है ज़्यादातर, वो भी ये काम ज़्यादा करती है। और हमारे यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर हाउसवाइफ है, तो ये काम उनके लिए ही बेस्ट। तो आपने बहुत बेहतरीन बोला, आप लोग सारे मिलजुल कर ओखई को चला रहे हैं ना, तो आप कुछ वर्ड्स गुजराती में बोलना चाहेंगी अपने भाई बहनों के लिए? हाँ, जैसे कि हमारे में एक कहावत है, ओखो जगथी नोखो, पण हूँ कहूँ छूँ कि मारो ओखो जगथी अनोखो। उसका मतलब है कि जो हमारा ओखा मंडल है वो सबसे अलग है, लेकिन वो अलग नहीं, एकदम अनोखा है। तो मारो ओखो सौथी नोखो अने सौथी अनोखो। जैसे कि मेरी मैं पर्सनल जर्नी बताऊँ तो मैं बॉर्न और बॉम्बे हुई थी, लेकिन हमारे कल्चर में रहता था कि पढ़ा लिखा के क्या काम है, तुम वैसे भी तेरे को शादी करके गांव में जाना और रोटी ही बनाना है। तो मैं 6वीं क्लास तक ही पढ़ी हुई लिखी, बॉम्बे में थी लेकिन फिर भी 6वीं क्लास तक ही पढ़ी लिखी हूँ। और बॉम्बे से मैं मीठापुर आई, तभी तो मेरे लिए सिर्फ ऐसे था कि मैं कहाँ पे आ गई। लेकिन उसके बाद मैंने 2 साल के बाद मैंने ओखाई ज्वाइन किया, तो जो मैंने बॉम्बे में रह के जो नहीं पाया वो मैंने ओखाई से पाया। और मेरी जैसी
कितनी सारी लेडीज है जिसकी जैसे कि लाइफ एकदम ब्लैक समझ रहे कि वहाँ पे बस खाना पकाना बच्चों का और ये और कुछ नहीं थी, वो भी अगर ओखाई के साथ जुड़ी तो आज वो हमारी जो बहनें हैं वो बहुत आगे है। और इवन मैं पर्सनली अगर कहूँ तो कोरोना के बाद काफ़ी लोग हमारे ऐसे थे कि जिसकी लाइफ में ओखाई के अलावा कुछ भी नहीं था, आज ओखाई ने उसको इतना आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं दिल से थैंक यू ओखाई। और आज हमारी जो बहनें हैं वो ओखाई की वजह से है। और ओखाई के लिए ही मैं बोलूँ तो मेरे जीवन में अगर भगवान के बाद कुछ है तो ओखाई है। हमारी जो पहचान है वो ओखाई से है, हमसे ओखाई है और हम ओखाई से है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको कुछ और बोलना है? हाँ, मैं स्पेशली हैदराबाद वासियों से बोलना चाहती हूँ कि हम स्पेशल आपके लिए यहाँ पे आए हैं, तो आप आइए, देखिए और बाय भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर देखने आइए ओखाई क्या है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने खुल के आपने सब चीजें बताई। एंड गाइस, ओखाई तो आना ही पड़ेगा आपको, सब कुछ चेक करना ही पड़ेगा। हैदराबाद के लोगों, छोड़ना मत ओखाई को, सबको आओ देखो, इतने प्यार से बनाया है इन लोगों ने, इतनी प्यारी प्यारी बातें करी है, तो आना तो बनता है यार।